Hello, evening, all. I'm going to discuss about the classics and NCERT chapter, major dominion of Earth. In this chapter, and the three main components, and the air and water and land, and the solid part of the land is called the lithosphere, and the large area of water is called the hydrosphere, and the gaseous gases form surrounded by the earth. It is called atmosphere. Total three components are mixed in the biosphere. As you have read in the first chapter, the Earth is only a planet. ये आपने रीड किया होगा कि अर्थ जो है एक तरह का क्या है, आपने रीड किया होगा अर्थ जो है क्या है, the Earth is a planet, life which has life. Human beings can live here because life is sustaining elements land, water and air. Water and air present on the Earth. Okay? The surface of Earth is a complex zone in which the three main components of the environment meet, overlap and interact. Three over main component है जो interact करता है and overlap the solid portion of the Earth is called the lithosphere, and the gaseous layer are surrounded by the Earth is called the atmosphere. Oxygen, nitrogen, carbon dioxide, and other gases are found. Water cover a very large big of area and the Earth surface. In this area is called the hydrosphere. The big area of the water surface, cover of the water surface. Water cover a very big large of area of the Earth surface. In this area is the hydrosphere. The hydrosphere comprises the water all is found. That is the ice, water and water. Biosphere in the narrow zone. Biosphere क्या एक छोटा जोन है where where we find land, water, air together, which contains all forms of life. यहाँ पे लाइफ क्या है, लैंड वाटर एयर टुगेदर एक साथ जो मर्ज करते हैं, मैच करता है, वो कहते हैं लाइफ को आता है. ठीक है. व्हाट इज द लिथोस्फीयर? द सॉलिड पोर्शन ऑफ द अर्थ, द सॉलिड पोर्शन इज द लिथोस्फीयर and the comprise the rock of the crust. The comprises rock of the earth is a crust. The thin layer of the solid contains a nutrient element which sustain organism. There are two main divisions of the earth's surface. Large land mass is the continent. Two land masses जो था large land mass in the continent, and huge of water is called the ocean bases. So all oceans are connected with the each another oceans, and look at the map in the figure. Are the all land masses connected with one another? Land masses and this both are connected to each other. This is the important points, and not to remember all points, just understanding and virtualizing very important. The level of seawater remain the same everywhere. Elevation of land are the measure the sea level. जो level of sea water है same everywhere, सभी जगह same है. Elevation of land is measured from the level of sea and taken as a zero. ठीक है ना. एक बात करते हैं कि आखिर ये सब आया कहाँ से, इन चीज को लेकर थोड़ा सा ठीक है, मैं करता हूँ. ठीक है. This is portion is the this portion is called the Asia continent. This portion is the Asia continent. This portion is the Asia continent. Turkey and this portion Saudi Arab. All the portion is called the Asia continent. In the Europe, second largest continent Africa, third in the North America, fourth in the South America, or fifth in the Atlantic and the European and Australia. Okay. Tropic of Cancer will passes through three main continents:
Asia, Africa, and North America. And the Tropic of Capricorn will be passing in the two countries, Africa, Australia, and South America. Pacific Ocean equator is the passes through the Kenya related in the South Africa and Africa. Okay. The continent is the Rocky Mountain, Appalachian Mountain, Andes Mountain, सबसे longest mountain in the range, Andes Mountain, and is the Himalayan, Tibet Plateau, and Alps, Alibaba, collapse the plain and collapse the aeroplane. It's the Atlas Mountain. Okay, Atlas Mountain, Great Barrier Reef, Great Dividing Range, and Great Barrier Reef. यहीं पे है. Sahara Desert, there is a Sahara Desert, Nile River, and Amazon River. Nile is the longest river in the Africa. All pointer cover this. Antarctica Research Center, Matri, Gangotri, this is the research center. What is the means that litho means होता है stone, atom means vapor, and indoor means होता है water, and bio means life. ठीक है, तो ये थोड़ा सा स्टडी आप कर लें. अब यहाँ से होता है कि दी हाईएस्ट माउंटेन पे कौन है? माउंट एवरेस्ट, 8,848 किलोमीटर सॉरी above sea level. कहाँ से? sea level. The greatest depth in the Mariana Trench in the 11,002. We imagine the depth sea is the more than highest point. Continent, 7 main continent: Asia, Europe, Africa. As chronological order: Asia, Africa, North America, South America, Antarctica, and Europe and Australia. The smallest in the Australia and the largest in the Asia. At the map of the world figure and notice that the greater part of the land mass lies in the North Hemisphere. सबसे ज़्यादा जो solid part है अर्थ का वो North Hemisphere में. Asia is the largest continent with a very it cover about the 1/3 of the total land area of the Earth. The continent lies in the Eastern Hemisphere. The Tropic of Cancer passes through this continent. Asia is separated from the Europe in the Ural Mountain. Ural Mountain से Asia and Europe separate है. In the both Asia, Europe and Asia either together in the is called the Eurasia continent. Europe is smaller than the Asia. This continent lies in the west of Asia. The Arctic Circle passes through in the boundary covered by the water, three-sided water. Three-sided water means this is the cover in the three-sided water. ये कहने का मतलब Arctic Ocean, ठीक है ना? यहाँ पे अपनी यूरोप की बात कर रहे थे. Arctic Circle passes through the boundary and covered in the side all the map of the world and located. Africa is the second largest continent after Asia. Europe, 0° latitude, run almost through the middle of the continent. 0° equator है, almost होता है वो center से पास है किसका? अफ्रीका का. ठीक है ना? A large part of the Africa lies in the North Hemisphere. Look at the figure in the 5 point. You have to find the only continent through which the Tropic of Cancer and Equator and Tropic of Capricorn. Sahara Desert, the world's largest desert in the located Africa, the continent bound. सबसे largest desert कहाँ पे? Sahara Desert. 12 country में है, मैं उसको मैप में पढ़ाऊंगा. Look at the map boundary, all side in the ocean sea. और सभी side से this continent ocean है, ठीक है ना? Island is small part, large portion of the area in the continent. Look at the world map and you will notice the world largest Nile river flow through the Africa. ठीक है? अफ्रीका की फ्लो के नॉर्थ टू मतलब नॉर्थ की तरफ होती है, साउथ टू नॉर्थ की तरफ फ्लो हो रही है. ये भी टॉपिक ऑफ कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन कभी कभी आपको एग्जाम क्रैक करने के लिए हो जाते हैं, पूछ देते हैं. ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न passes through the this area. Tropic of Capricorn, Tropic of Cancer, this is the world map. Tropic of Capricorn, Tropic of Equator, and this is the temperate, this is the torrid zone. This is the torrid zone. This is the hottest zone. This is the temperate zone. This is the temperate zone. This is the 66 degree. North America, third largest continent. North America, third largest. We cover a narrow strip is called the
Isthmus of Panama. जो टू लैंड जो होता है isthmus जो होता है isthmus जो है isthmus isthmus of Panama. पनामा मतलब जो टू लैंड मास से कनेक्टेड होते हैं isthmus बोलते हैं, ठीक है ना. और पनामा द हेमिस्फीयर थ्री ओशियन सराउंडेड बाय द कॉन्टिनेंट, द ओशियन साइडेड सराउंडेड है. This is the isthmus. It is the portion of isthmus narrow in the Panama. इसी को ये पनामा जो है, पनामा का ऑप्शन में देखेंगे सॉरी आएगा. द स्ट्रेट इन द नैरो पास है द वाटर कनेक्टिंग टू द लार्ज वाटर बॉडी सी एंड ओशियंस, ठीक है ना. द स्ट्रेट स्ट्रेट होता है टू नैरो पास ऑफ द वाटर कनेक्टिंग टू द लार्ज वाटर बॉडी. टू लार्ज वाटर बॉडी है और कनेक्ट है मतलब द स्ट्रेट नैरो पासेज वाटर कनेक्टिंग टू लार्ज वाटर बॉडी सी एंड ओशियन. दो सी एंड ओशियन टू नैरो जो से कनेक्टेड होते हैं इसको स्ट्रेट. स्ट्रेट स्ट्रेट ऑफ मलक्का, स्ट्रेट ऑफ पनामा, स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर, इधर श्रीलंका इधर स्ट्रेट. स्ट्रेट श्रीलंका का क्या है स्ट्रेट है, नेम ऑफ स्टेट मींस इंडिया एंड श्रीलंका, इसका स्ट्रेट नाम ही है, ठीक है ना. साउथ अमेरिका लाइज इन द south hemisphere, which is the ocean surrounded in the east and west. Andes world longest mountain. Andes is the world longest mountain range run through the length from the north and the south. The South America has the world largest river in Amazon. Amazon river, world largest river, the longest largest river. Largest, not a longest, longer than the Nile River. Australia is the smallest continent that lies entirely in the South Hemisphere. It is surrounded on all sides by the ocean and sea. It is called the island continent. Antarctica completed the South Hemisphere, the huge continent. The South Pole lies almost at the center of this continent as it is located in the South Polar region. It is permanently covered with thin ice sheet. मतलब ये सब आइस से घिरा हुआ है. There are no permanently covered in the thin sheet. No permanent human settlement. नो यहाँ ह्यूमन सेटलमेंट नहीं होती. रिसर्च स्टेशन अंटार्कटिका में बहुत सारे रिसर्च स्टेशन, मेनी कंट्री है द रिसर्च स्टेशन अंटार्कटिका. मैत्री एंड दक्षिण गंगोत्री द रिसर्च दक्षिण गंगोत्री, ठीक है ना. Hydrosphere is 72%, 77.2%, and the water cover 0.03, the fresh water and stored in the ice. The Earth is called the blue planet. Earth is called क्या है blue planet है. Blue planet है 71% Earth cover and the water and 29% land. Hydrosphere means all the form. The running water is ocean and river, the lake, ice and glacier. All the 97% cover है ocean का. A large portion of the rest of the world in the form of ice sheet. बाकी जो बचा हुआ एक तरह का ice sheet है. 2.8% the ice sheet. Glacier under the very large small percentage of the fresh water. In humans, wings are very important. यहाँ पे दिखाया गया कौन सी कितनी लार्ज है तो उनके बारे में बता दिया गया. तो आप फर्स्ट में देखें, this is the first portion, this is the second portion, this is the third portion, this is the third portion, this is the fourth portion. See the this is the fifth portion, this is the fifth, sixth and seventh portion. ये कर सकते हो कितना 2 4 6 2 8 10 2 4 6 8 10 12 मतलब इस सब काउंट कर सकते हो, ठीक है. तो 1 2 3 3 4 5 6 and 7, ठीक है. तो अरेंजिंग ऑर्डर में आप ध्यान. Ocean is the major part of hydrosphere. They are all interlinked. The ocean water always moving. The three chief movement of the ocean water waves, the tidal and ocean current. Five major oceans are Pacific Ocean, Atlantic Ocean, Indian Ocean, South Ocean, Arctic Ocean. So five major ocean, Pacific Ocean, Atlantic Ocean, Indian Ocean, South Ocean, and Arctic Ocean. This is the map. Look in the map. First of all, look in the map.
is the portion of the Pacific Ocean, longest ocean, ठीक है, largest ocean. This is the Atlantic Ocean. Second, yes, this is the Indian Ocean. This is the South Ocean. This is the Arctic Ocean. Time 1, 2, 3, 4. Fourth, and Mediterranean Ocean. This is the fifth. So 5 in the oceans and 7 in the continent. Pacific Ocean is the largest ocean in the spread on the one of the third of the earth and Mariana Trench and deepest part of the earth lies in the Pacific Ocean. मैंने ये आपको बता दिया था कि कहाँ पे deepest part है, Mariana Trench जो है सबसे बड़ा है. Pacific Ocean is almost circular and S shape. Actually, this is the S shape. Pacific Ocean in the circular shape. Atlantic is the S shape. मैंने दिखाया. The circular shape में almost circular shape. Australia North, South America. Look at the map. Find them the located in the continent around the Atlantic Ocean, the largest second ocean in the world. Second ocean is shape. Flanked on the north and south. ये दोनों south and north में दोनों में ये cover करता है. मैंने आपको समझाया वहाँ पे. America on the western side, Europe and the Africa eastern side. This is the eastern side Atlantic and Africa is the west side. America, Europe and Africa is the eastern side. Coastline is the Europe and the eastern side. Antarctica highly intended. काफी ये मतलब इंटेंडेड फैला है. इरेगुलर है इसका शेप. इंटेंडेड कोस्ट लाइन है और काफी ज्यादा कोस्ट लाइन है. कोस्टल मतलब कोस्टल एरिया में बताऊंगा. आइडियल लोकेशन ऑफ द नेचुरल हार्बर एंड पोर्ट. इससे ये आइडियल जो होता है, हार्बर ज्यादा है, पोर्ट ज्यादा है. द पॉइंट ऑफ व्यू, कॉमर्स पॉइंट ऑफ व्यू वेरी इंपॉर्टेंट. इट इज द बिगेस्ट ओशियन. इससे ये बिगेस्ट ओशियन है, सबसे बिजी ओशियन है. इंडियन द ओनली नेम ऑफ आफ्टर द कंट्री. यही एक ऐसा ओशियन है जो कंट्री के नाम पर इनकी नामकरण हुई है. ई शेप ऑफ ocean is almost triangular sea. This is the triangular sea. It is north and the bound by the Asia, in the west by the Africa and east by the Australia. The South Ocean in circle and continent of the Antarctica extended in the north and the 60 degree in the south latitude. The Arctic Ocean located in the Arctic circles and surrounded by the North Poles. It is the connected with the and the Bering Strait. Bering एक स्ट्रेट है, एक बेरिंग स्ट्रेट है, उससे इसको जाना जाता है नैरो स्ट्रिप को. आर्टिक ओशियन लोकेटेड इन द आर्टिक सर्कल है, वहां पे लोकेट है नॉर्थ पोल पे, जो कनेक्टेड है पैसिफिक ओशियन से नैरो जोन से, जो करते हैं बेरिंग स्ट्रेट वहां पे वो कनेक्टेड है. बेरिंग स्ट्रेट से कनेक्टेड है इससे पैसिफिक ओशियन से. ठीक है ना. The Arctic Ocean, Arctic Ocean, which the Arctic Circle, therefore connected with the Pacific Ocean by narrow strait. Shallow water जो हल्का सा वाटर जो है वो नॉर्वे बेरिंग स्ट्रेट बोलते हैं. and bounded by the northern coast of the North America and Eurasia. Atmosphere was the atmosphere. The Earth surrounded by layer of the gases is called atmosphere. Thin layer, a blanket appear in the integral and important aspect of the planet. It provides us with air, where a breath and protect us from the harmful effect and sun rays. Almost extend up the height of about the इतना किलोमीटर 1600 किलोमीटर एक्सटेंड है. एटमॉस्फेयर डिवाइडेड इन द 5 कंपोनेंट. एक होता है 5 कंपोनेंट है इनके. फर्स्ट कंपोनेंट है टेम्परेचर properties. This layer starting in the earth surface is called troposphere. तो स्टार्टिंग पोर्शन है उसको ट्रोपोस्फीयर कहते हैं. स्ट्रेटोस्फीयर, मेसोस्फीयर, थर्मोस्फीयर एंड एक्सोस्फीयर. दिस द ट्रोपोस्फीयर, स्ट्रेटोस्फीयर, मेसोस्फीयर एंड थर्मोस्फीयर. The atmosphere is a composed mainly in nitrogen, oxygen, which make up the 90% of the clear, dry and
Here, nitrogen is the 78%, oxygen is the 21%, and gaseous carbon dioxide, argon, other comprise 1% of the volume. Oxygen is the breath of life, while the nitrogen helps in growth of the living organism. Carbon dioxide to the present the minutes amount absorb the heat and radiation, ठीक है ना? ये काफी ऑब्जर्व करता है हीट एंड रेडिएंट को बाय द अर्थ एंड कीपिंग द प्लैनेट वार्म, काफी ये गर्म भी होता है. डिस्टली एटमॉस्फेयर वेरी हाई, maximum sea level decrease rapidly, go up. Climber experience problem in breathing due to this decreased destiny of air. एक एयर का डिक्रीजिंग है इसमें मतलब डेस्टिनी. they have the carried oxygen cylinder about the great high altitude. तो जितना ऊपर जाते हैं हमारा ऑक्सीजन का लेवल क्या होता है, डिक्रीज करता रहता है. टेम्परेचर ऑल्सो डिक्रीज ग्रो अपवर्ड, जैसे ही हम ऊपर जाते हैं टेम्परेचर होता है वो डिक्रीज करता रहता है. ऑल एटमॉस्फेयर एक्सचेंज प्रेशर और देयर आर वेरियस फॉर्म ऑफ प्लेस. some area experience high pressure, some area is the low pressure. Air movement high pressure and low pressure, moving air in the wind, ठीक है ना? Biosphere is the narrow zone contact between the land and air and water. In this zone that lives that unique in the planet exist. ये है कि यहाँ पे थ्री जो कंपोनेंट्स है कांटेक्ट है उसको बायोस्फीयर. देयर आर सेवरल There are several organisms that vary in the size and microbes, bacteria to huge mammals. All the living organisms, including the human, linked to each other to the biosphere for the survival. Organisms in the biosphere mainly broadly by the divided into plant kingdom and animal kingdom. The domain of the earth interact with each other, affect each other in some way the other. Cutting of the forest for the fulfilling of our needed of wood, clearing the agriculture, removal of solid and natural calamity, earthquake the available, submerge of land, the tsunami recently, Andaman and Nicobar submerged the underwater. Submerged the underwater, हाल में सुनामी आया था. रिवर इंदिरा पॉइंट इन द समर इंडिया का इंदिरा पॉइंट है सबसे लास्ट पोर्शन ऑफ इंदिरा पॉइंट. समर द tsunami. River make water unsuitable and human use. It is all damage form of life. Erosion from industry, thermal power plant, vehicles, pollution air, carbon dioxide, important constitute of air. But the increase in the amount of CO2 lead to increase in the global temperature. This is the term of the global warming. There is thus the need to the limit use of resources and earthing, maintaining the balance of the natural nature between domain of the lithosphere, atmosphere, and heterosphere. What is the four major dominion of the earth? Name of the major continent of the earth, name of the two continent and the entirely question है. तो ये करने मतलब कि पहले व्हाट इज द फोर मेजर डोमिनियन ऑफ अर्थ, कौन कौन मेजर है? तो आप एयर बताए, लिथोस्फीयर, एटमॉस्फेयर, हाइड्रोस्फीयर एंड बायोस्फीयर. मेजर कॉन्टिनेंट ऑफ अर्थ, मेजर 7 कॉन्टिनेंट और द एशिया, अफ्रीका एंड नॉर्थ अमेरिका एंड साउथ अमेरिका एंड अंटार्कटिका एंड Europe and Australia, and the Australia is not a continent like sorry, like the name of the Oceania continent. Actually, we know Oceania continent. I'm difference about the name of the two continents are the entirely and the South America. Name of the differently are the atmosphere and the Earth is called the planets, blue planet. And why the North is in the land hydrosphere by the important living organisms. Okay, right? This is the question around the mountain range that the separate mountain separate जो होता है and the Europe and Asia in the separate in the end. This is the last range. I am discuss about the question. Separate Europe and Eurasia. Europe and Asia with the Andes mountain. But Andes, sorry, Ural mountain. Sorry, Ural mountain. This is the wrong answer. The wrong answer. This is the wrong answer. Okay.
दिस द कनेक्टेड नॉर्थ अमेरिका इंटरलिंकिंग साउथ अमेरिका, उसको क्या बोलते हैं? इस्थमस। ठीक है, इस्थमस। द मेजर एटमॉस्फेयर प्रेजेंट इन द नाइट्रोजन, ठीक है, सबसे ज्यादा कौन है अर्थ पर एटमॉस्फेयर प्रेजेंट? नाइट्रोजन है। डोमेन ऑफ अर्थ कंसिस्ट द सॉलिड रॉक इन द लिथोस्फीयर, एंड विच इज द लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट द एशिया, द डीपेस्ट मैन मिडियाना ट्रेंच। आंसर कर दोगे? द ओशियन इज नेम ऑफ द आफ्टर कंट्री, इंडिया, इंडियन ओशियन कंट्री के नाम पे पड़ा है, ठीक है ना। दी नैरो कॉन्टैक्ट जोन ऑफ द लैंड वाटर, नैरो कॉन्टैक्ट बायोस्फीयर, ठीक है, आंसर कर दोगे आप। द कॉन्टिनेंट्स ऑफ यूरोप एंड एशिया नॉन एज यूरेशिया, यूरेशिया। द हाईएस्ट माउंटेन पीक इन द और माउंट एवरेस्ट 8848 मीटर, ठीक है, 11,002 इसमें हमने ये समझा देते हैं, इसको समराइज कर देते हैं, ठीक है ना। इसमें थोड़ी सी यदि कोई को प्रॉब्लम हो, थोड़ी मैं समराइज कर दूं इस पॉइंट को। इससे पहले कि देखिए ये बोला गया कि अर्थ जो होता है वो तीन मेन कंपोनेंट से बना हुआ है। फर्स्ट ऑफ द एयर, सेकंड इज द वाटर, एंड थर्ड इज द एयर, वाटर एंड लैंड। द एयर फॉर्म, एयर से जो गैसेस फॉर्म ऑफ gaseous form surrounded by the water, it is called the atmosphere. The solid part is called the lithosphere, and the lithosphere atmosphere or surround covered by the water of land, it is called the hydrosphere. Sorry, hydrosphere. And nitrogen, three components are mixed, is called the biosphere. Life is sustaining in the earth. ठीक है, उसमें तीन चीज में बोला गया, ये तीन चीज बनाई गई। लिथोस्फीयर जो होता है उसके बारे में बताया गया। तो लैंड, लार्ज लैंड मासेस इज कॉल्ड द कॉन्टिनेंट, एंड लार्ज ह्यूज ऑफ वाटर बॉडी इज कॉल्ड द ओशियंस। दिस द मेन पॉइंट्स। ये बोला गया कि कोई भी जो हम हाइट जब मेजर करते हैं, एनी लैंड ऑफ मेजर द हाइट इज कॉल्ड द elevation point of the sea level. Everywhere elevation of land are measured in level of sea level taken as a zero. इसको क्या किया है? जीरो लिया गया है, ठीक है। अब हम ये बात करते हैं कॉन्टिनेंट है क्या। मैंने कॉन्टिनेंट दिखाया, एशिया कॉन्टिनेंट, सेकंड द अफ्रीका कॉन्टिनेंट, थर्ड इन द नॉर्थ अमेरिका एंड साउथ अमेरिका, एंड द साउथ अंटार्कटिका, एंड द यूरोप एंड ऑस्ट्रेलिया। एंड ऑस्ट्रेलिया इज अलग नेम ऑफ ओशिनिया कॉन्टिनेंट, ठीक है ना, ओशिनिया कॉन्टिनेंट, ठीक है। इस बारे में अब हमने बताया कि आखिर क्यों डिवीजन है, क्यों नहीं। एशिया जो होता है सबसे लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट है, आपको बताया गया। यूराल माउंटेन से डिवीजन किया गया है। ये दोनों जो कॉन्टिनेंट मरता है, यूरोप एंड एशिया, उसको यूरेशिया बोलते हैं। टू लैंड मासेस कनेक्ट होते इस्थमस बोलते हैं। टू लैंड मासेस आर कनेक्टेड टू इस्थमस। टू नैरो वाटर आर कनेक्टेड, ocean are connected, इसको स्ट्रेट, like Gibraltar, this is the Gibraltar, Indian Ocean, India and Sri Lanka will be connecting the straight. Narrow zone of the water is called a strait, connecting to the Great Barrier Reef and Great Dividing Range in the Australia, Rocky Mountain in the North America, Appalachian Mountain in the longest mountain in the Alps, Andes mountain, ठीक है। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न एंड इक्वेटर इन द वेरी क्लियर पॉइंट। लार्ज लैंड मासेस आर नॉर्थ हेमिस्फीयर, शॉर्ट लैंड मासेस आर द साउथ हेमिस्फीयर, लार्ज वाटर बॉडी आर द साउथ हेमिस्फीयर। ऑटोमेटिकली कनेक्टेड, यू आर ए विजिबल पॉइंट। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर passes the continent, three main continent, Asia continent, Africa continent, North America continent. Zero water middle pass on the Africa, and the Africa middle pass in the South America, two continent. But three continent tropic of Cancer pass, three tropic Capricorns. North South America, Africa and Australia. It is the main point are connected. These are all point. ये सब जो है आपको एशिया एंड यूरोप के बारे में बताया गया। कौन से कहाँ पे क्या है, अमेजन रिवर कहाँ पे है, सबसे लार्जेस्ट रिवर, लॉन्गेस्ट रिवर नाइल रिवर अफ्रीका में है। इन सबको मैंने सब चीज को समराइजेशन के थ्रू बता दिया।
पनामा क्या है, दो कॉन्टिनेंट जो ये दोनों है, नॉर्थ में साउथ में, इस्तेमाल ऑफ पनामा। ठीक है ना, इंडियन ओशियन के बारे में ना, ऑस्ट्रेलिया, अंटार्कटिका में, अंटार्कटिका जो है लाइफ तो सस्टेनेबल नहीं है, क्योंकि लार्ज वहां पे क्या है कि थोड़ा सा बहुत ज्यादा बर्फ एरिया है, आइस एरिया है, तो वहाँ लाइफ तो नहीं होता है, ह्यूमंस नहीं रह सकते, बट बहुत सारे रिसर्च है, मिनरल्स बहुत हाई है, पेट्रोलियम को लेके, यूरेनियम्स को लेके, वहाँ पे रिसर्च सेंटर है। हमारा भी रिसर्च सेंटर है इंडिया का, मैत्री एंड दक्षिण गंगोत्री इंदा। हाइड्रोस्फीयर में 97.2% ऑफ वाटर इन द ओशियन सॉल्टी वाटर, नॉट ए यूज ऑफ वाटर, बट 0.03 इन द फ्रेश वाटर, एंड द 2.77% एज द आइस सिट। क्या है, आइस सीट है अंटार्कटिका। देखिए एक अंटार्कटिका, एक आप पढ़ोगे पेरिस क्लाइमेट चेंज को लेके कि जब ये बॉडी, ये जब यहाँ से मेल्ट होगा तो क्या इंडियन ओशियंस का लेवल बढ़ेगा, ऑटोमेटिक बढ़ेगा। ओशियंस का लेवल बढ़ने से क्या होगा कि जो भी मर्ज है, जो भी लैंड वाटर है, वो क्या करेंगे, डूब जाएंगे, सबमर्ज हो जाएंगे। इसीलिए इंडिया का जो इंदिरा पॉइंट है अंडमान एंड निकोबार का, वो क्या हो गया, सबमर्ज हो गया। यही सब है इसमें पॉइंट, अभी तो बेसिक बेसिक है। इसमें है कि आप कौन कौन है फर्स्ट लेवल से सेकंड इकोनॉमिक का ऑर्डर से है, आप देख के इस मैप को समझ जाना थोड़ा बहुत। अब जाके अंटार्कटिका का शेप कैसा है, शेप कैसा है, अटलांटिक का शेप कैसा है, शेप के बारे में बताया गया। पैसिफिक ओशियन का शेप सर्कुलर है, ठीक है ना, इंडियन ओशियन का ट्रायंगुलर है, ठीक है ना, ये सब शेप है। और एक बात है कि आर्टिक ओशियन जो है, आर्टिक ओशियन, आर्टिक ओशियन जो है वो पैसिफिक ओशियन से कनेक्ट है। एक ग्रेट बैरिंग स्ट्रेट है, बेरिंग स्ट्रेट रसिया का पार्ट होता है, बेरिंग स्ट्रेट ऊपर में है, वहीं से कनेक्टेड है। बाकी एक बोला गया कि एटमोस्फेयर में भी बहुत सारे पार्ट है। एक होता है थर्मोस्फेयर, स्ट्रेटोस्फेयर, ट्रोपोस्फेयर, 1600 किलोमीटर तक एटमोस्फेयर। ऊपर जाएंगे तो एयर डिक्रीज करेगा, ऊपर जाएंगे तो वाटर का, ऑक्सीजन का लेवल डिक्रीज करेगा। स्ट्रेटो मेसोस्फीयर, जो हमारा स्ट्रेटोस्फीयर में जो होता है, एरोप्लेन्स वगैरह एटमोस्फेयर के ऊपर भी चलते हैं, ठीक है। हमारा मिसाइल सिस्टम है, जो हमारा एक्जोस्फीयर होता है, उसमें क्या करते हैं, थर्मो इसमें में जो होता है, ये सब चीज चलते हैं, मतलब एक्चुअली सैटेलाइट्स वगैरह मूव करते हैं, ठीक है ना। रॉकेट्स वगैरह हम चलते हैं, वो मेसोस्फीयर के ऊपर चलते हैं, ठीक है ना। ये सब चीज है। और बाकी तो ये सब मैक्सिमम डिग्री बायोस्फीयर को लेकर बताया गया, लिथोस्फीयर को लेकर बताया गया, ठीक है। ऑर्गेनिज्म के बारे में बताया गया, प्लांट का क्या है, CO2 को लेकर बताया गया। तो ऑल पॉइंट आर कवर। ओके, थैंक यू। गुड नाइट।